So, good evening, everyone. Welcome back to the PYQ lecture. As you can see on the screen, today's topic and probably the last topic before your exam starts is binomial theorem. It is binomial theorem. So, we'll be doing PYQs of binomial theorem. Let's start. So, first one is here. The coefficient of x raised to the power 256. Okay, I'm checking the stream. Just a second. Yeah, the coefficient of x raised to the power 256 in the expansion of here is an expansion given. Let's see what does we get or how to solve it. Chalo. So first, obviously, guys, we have to simplify this expansion. So what I'll write is yeah. I can write this expansion as 1 minus x into 1 minus x raised to the power 100 into 1 plus x square raised to the power 100. Correct? अभी ये दोनों की power same है, so we can group them together. So I'll get 1 minus x into 1 minus x into 1 plus x square raised to the power 100. Now if you see अंदर कौन सा format बन रहा है? अंदर the format is a minus b into a square plus ab plus b square. So we can write it as 1 minus x into a cube minus b cube raised to the power 100. Abhi now we can open the brackets. That means ये पूरा bracket multiply करना है. So I'll get 1 minus x the whole cube raised to the power 100 minus x into 1 minus x cube raised to the power 100. Now, we want the, you can say, coefficient of x raised to the power 256. Right? Now, if you think, then we must have x raised to the power 256 from here and from here. But if you think really, here in this expansion, the first one, we will be getting x की power जो आएगी, that will be multiples of 3. That will be multiples of 3. So 256 never comes in multiples of 3. That is 256 is not divisible by 3. So यहाँ से तो हम लोग को x raised to the power 256 नहीं मिलने वाली है. So we'll get x raised to the power 256 from here. Correct? That means हम लोग को x raised to the power 256 यहाँ से मिलने वाली है, which is minus x into 1 minus x cube raised to the power 100. अभी as we already discussed, यहाँ पे x raised to the power 256 नहीं आने वाली है, but here already एक x है. So from here, if you really understand binomial theorem, then अगर मैं ये वाली टर्म को expand करूंगा 1 minus x cube raised to the power 100 को, then I'll get many terms. जो भी टर्म्स आएंगी वो सब टर्म्स x से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि वो x एक बार है. तो यहाँ से मुझे चाहिए x रेज टू द पावर 255 जो कि 3 से डिविजिबल है. 255 डिविजिबल बाय 3. तो इसमें से x रेज टू द पावर 255 थी. अभी वी नो दिस कि 1
प्लस एक्स रेश टू द पावर एन का जनरल टर्म क्या होता है? एनसीआर एक्स रेश टू द पावर आर, एंड 1 माइनस एक्स रेश टू द पावर एन का जनरल टर्म -1 रेश टू द पावर आर एनसीआर एक्स रेश टू द पावर आर। हम लोग को तो ये चाहिए, करेक्ट? सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस पहले से जो बार वाला है, एंड इसका जनरल टर्म होगा -1 रेश टू द पावर आर। आर हम लोग को चाहिए एक्स रेश टू द पावर 255, सो इट विल बी 255 इनटू, सॉरी 255 नहीं होगा ना, 255 डिवाइड बाई 3, सो 255 डिवाइड बाई 3 बिकॉज x की पावर 3 है ना, इसके लिए दैट विल बी इक्वल टू 885, so it will be 85 into 100 c 85 into x raised to the power x cube raised to the power 85। so ये क्या हो गया? -1 raised to the power 85 is -1 into 100 c 85 into x raised to the power 255। we want the coefficient, so coefficient मतलब इतना ही पार्ट आएगा, and if you see minus minus तो cancel हो जाएगा, we'll get 1, and finally we'll only be left with 100 C85, which is nothing but 100 C15. So this is our answer, option number 2. Correct? A very simple question. Let's move on to the next. This one. The number of rational terms. Now this is a very famous question, right? If you have solved, you can say class में भी अगर किया है तो ऐसा question तो किया ही हो. Number of rational terms. Just one caution you have to put here. कि 4 को I can write 2 square बस, because I want to find rational term. So it is better कि सबको जितना simplify हो सके उतना कर दे. This will be equal to 2 raised to the power half plus 5 raised to the power 1 by 6 raised to the power 120. Right? Let us write the general term. General term क्या होता है? N C R x raised to the power r y raised to the power n minus r. n क्या है? 120 minus r. Right? This is the general term. So tr basically, let us simplify. तो क्या मिलेगा? 120 cr 2 raised to the power 60 into 5 raised to the power 20 minus r upon 6. मुझे रैशनल टर्म्स चाहिए. So for rational terms, this should be an integer. For rational terms, this should be an integer. So r by 6 should be equal to, let's say, lambda. So r will be equal to 6 lambda, where lambda is an integer. Okay. So r can be equal to multiples of 6, 6, 12, 18. कहाँ तक जा सकता है r? 120 तक, right? Because here the maximum power is 120. So how many terms are there? This is an AP. If you see, it's an AP. So number of terms find करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? 6 120 से डिवाइड कर लो तो 21 टर्म्स आएंगी, राइट? या फिर you can, what you can do, you can find the Tn वाला फॉर्मूला. तो Tn is 120 which is equals to A plus n minus 1 into D is equal to 6 plus 6n minus 6. 6 and 6 will get cancelled. So 120 equals to 6n.
So n equals to 20. Right? Okay, sorry. हम लोग ने एक मिस्टेक कर दिया. R can also be 0. Right? Because 0 से start हो सकता है. So R can be 0, 6, 12 up to 120. So basically Tn is 120 is equals to A plus n minus 1 into D. So it is equals to 6n minus 6, 120. So 6n will be equals to 126. So n is 21. 21 is my answer. Got it? Integer type question है. So 21 is the answer. Let's see the next. Next one is interesting. लग रहा है इंटरेस्टिंग देखने में है ना. Let's see. So for k belongs to natural numbers, let LHS में कुछ तो एक्सप्रेशन दिया है is equals to RHS में we have summation where alpha is greater than 0. Then the value of, so basically we need to find A14, A15, A13. If we get A14, A15, A13, then we get our answer. Correct? So A14 means K की जगह पे 14. Correct? So A14. Now, I hope you must know partial fraction. अभी partial fraction तो इंटीग्रेशन में आएगा और इंटीग्रेशन अपना हुआ नहीं है ना. ओह, दैट्स व्हाई व्हाट आई वाज थिंकिंग कि कोई दूसरा मेथड है क्या. बट पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा आई डोंट थिंक देयर इज अनदर मेथड. पार्शियल फ्रैक्शन शुड आई एक्सप्लेन इट. टाइम लग जाएगा ज्यादा. क्या करे. ठीक है. फॉर नाउ वी डोंट नो पार्शियल फ्रैक्शन, सो आई थिंक वी शुड स्किप दिस क्वेश्चन. अगर एंड में टाइम बचता है तो आई विल डिस्कस इट. ओके. तो लेट्स सी दिस. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई थिंक एंड में टाइम बचेगा. विल डिस्कस व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन आल्सो एंड देन विल डू द क्वेश्चन. डोंट वरी. बट बाकी जो पोर्शन पोर्शन मतलब अभी तक जो सिखाया है वो कर लेते. So if the constant term in the binomial expansion of this is 180, then R is equals to. So this is very simple question. Like textbook में भी तुम लोग को NCERT में भी मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चन. Right? So constant term. So first we will write the general term. Okay, यहाँ पे भी R दिया है ना, तो जनरल टर्म के लिए we'll use capital R. So NCR. So 10CR 2XR raised to the power R into 1 upon x square raised to the power 10 minus R. So if we separate it, 10CR 2 raised to the power R, x raised to the power R into R upon x raised to the power 20 minus 2R. 1 को तो I don't think फर्क पड़ेगा. Now if you use indices for x के coefficients, so 10CR 2 raised to the power R
x raised to the power rr minus 20 plus 2r. Correct, correct. Yes. So this is TR. So constant term is 180. तो कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होना चाहिए? आर आर एक्स की पावर 0 होनी चाहिए ना. सो व्हाट इज एक्स की पावर? दिस शुड बी इक्वल्स टू 0. So if I take capital R common, I'll get R plus 2 equals to 20. 20 ko I'll shift it on the other side. So we got equation number 1. Second condition is given that term is 180. That means this is the value of TR. है ना? 180 is the value of TR. So if we substitute 180 is equals to 10 CR 2 raised to the power R into, यहाँ पे substitute करने की जरूरत नहीं है because this will be 0. Correct? Now, what is capital R? 20 upon R plus 2. 20 upon R plus 2. So, how could we simplify it? सोचो. Did we made an error? एरर तो कुछ नहीं किया है ना. ओके. सो यहाँ पे फ्रॉम 1, सॉरी, आई कैन राइट capital R is equals to 20 upon R plus 2. Now, or vice versa, then write R plus 2 is equals to 20 upon R. So R will be equals to 20 upon capital R minus 2. Now, this is equation number 2. Basically, I think we will use trial and error if I substitute the value of capital R, because I think वैसे ही होने वाला है. क्योंकि अगर ये वैल्यू यहाँ पे अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दी तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है. सो आई थिंक ट्रायल एंड एरर, एंड प्लीज रिमेंबर ट्रायल एंड एरर इज अ वेरी यूज्ड वे इन जेई मेंस. करेक्ट? सो अगर लेट्स सी we cannot substitute R as 0. So if I substitute capital R as 1, 2, 3 up to 10, I can substitute. Correct? So if I substitute 1, तो ये satisfy नहीं होगा. 1 के लिए satisfy नहीं होगा ना. If capital R equals to 1, equation 2 is not satisfied. See? So if R equals to 2, 2 may be equation 2 is not satisfied. 3, 10C3. 3 में हो रहा है क्या? Let's check for 3. So 10C3 into 2 raised to the power 3.
which is 10, 9, 8 into 8. So 3 3s are 9, 2 4s are 8, 4 3s are 12, 12 8s are 96. नहीं, 3 में भी नहीं हो रहा है. 4, so 3 में भी नहीं हो रहा है. R equals to 4. 4 में 10C4 होगा ना, so 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1 into 2 raised to the power 4. So 4 2s are 8, 2 and 2 cancel, 3 3s are 9. So 7 3s are 21, 21 into 10, 210 तो इधर ही हो गया. So 4 में भी नहीं हो रहा. 4 में भी it is not satisfying. Okay, okay, okay. एक मिनट, 2 में हो रहा था क्या? 2 में हम लोगों ने चेक ही नहीं किया ना, वी चेक डायरेक्टली 3. सो 10C2, एक मिनट, या 1 में तो नहीं हो रहा है क्योंकि 10C1 इज 10 इंटू 2 20. सो 10C2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4. 2 1 जा 2 2 जा 4. हाँ, 10 9 जा 90, 2 जा 180. सो कैपिटल आर इज 2. देखा, जनरली वही मैं आई वाज थिंकिंग कि 4 3 4 5 इतना तो कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए. जनरली 1 2 3 में हो जाता है, बट 2 वी डिड नॉट चेक. सो आर वी गॉट 2. So small r will be equals to 20 upon 2 minus 2, which is 10 minus 2. Small r is 8. Is our answer. Integer type tha, so 8 is our answer. Yeah. And let's see the next question. This one. अभी ये क्वेश्चन तो पहले देखते ही अपने को inequality वाला है. आई थिंक inequality questions also you must have done in your class as well. अपने इवन से अवंती नोट्स में है. अवंती नोट्स मीन्स the notes that from MCQs, क्या बोलते हैं उसको, करेक्ट. तो फर्स्ट तो टू क्लिक की inequality का क्वेश्चन है, सो वी हैव टू डू इट बाय binomial theorem is a great thing, correct. So what we can do here is, see, हो पावर तो n है. Power n means another hint ki we can use binomial theorem. So if we directly expand, I think we'll get a problem. But if you see the relation between the numbers, 11 is 10 plus 1, and 9 is 10 minus 1, and we already have 10, right? So there is some relation here. तो हम लोग ऐसे expand कर सकते हैं, है ना? The number of elements in the set, and this condition is given ना, मतलब n की value find कर. Okay, so I think इसमें भी शायद से we have to use trial and error. So I can write it as 11 raised to the power n minus 9 raised to the power n greater than 10 raised to the power n. Correct? तो 10 11 को क्या लिखा था? सॉरी, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस. 10 plus 1 raised to the power n minus 10 minus 1 raised to the power n is greater than 10 raised to the power n. Now, if you see this, this is very standard expansion of a plus b raised to the power n minus a minus b raised to the power n. इस subtraction की वजह से which terms are left? Only odd. Only odd terms are left.
So what we'll have is we'll have 10C1 सब twice हो जाएगा, correct? So 2 into 10C1 into 10 raised to the power n minus 1 plus 10C3 into 10 raised to the power n minus 3 plus dot 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 and so on. Let's write 10C5 10 raised to the power n minus 5 is greater than 10 raised to the power n. So if you open this bracket, ये bracket तो बहुत ही simple है. N कैसे आया? Sorry, it should be n n n n n n. Yeah, my mistake. So if we multiply 2 here, so we'll get 2 into n into 10 raised to the power n minus 1 plus 2 into nc3 10 raised to the power n minus 3 plus nc5 10 raised to the power n minus 5 and so on. Now see, हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है n की, राइट? कितने टर्म्स हैं? So again, we have to check this inequality which satisfies for which values of n. So basically, we have to again, if you understand, check for n equals to 1, 2, 3 and so on. I think जल्दी आंसर आ जाएगा. Uh, 1 के लिए I think अगर if I substitute n equals to 1, so n equals to 1 के लिए ये तो कुछ काम का ही नहीं रहेगा, करेक्ट? ये पावर ही नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पावर नॉट पॉसिबल. So n equals to 1 के लिए we'll get 2 is greater than 10. So does not satisfy. Does not satisfy. N equals to 2 के लिए we'll get 440 is greater than 100. N की जगह पे 2 रखा, तो 2 के लिए भी ये तो नॉट वैलिड होगा ना. 2C3 is does not make sense. So here इसका वैल्यू आएगा 40 and इसका वैल्यू 10 raised to the power 2. So 10 raised to the power 2 is 100. So let's skip some numbers and try to put n equals to 5. Why I'm saying n equals to 5? Because n equals to 5 में क्या मिलेगा देखो, 2 into 5 into 10 raised to the power 4 plus 2 into 5C3 10 raised to the power 2 plus 5C5 is greater than 10 raised to the power 5. Now please look, if 5 2s are 10 and 10 into 10 raised to the power 4 is 10 raised to the power 5 plus 2 into something is greater than 10 raised to the power 5. So this is true, right? Why true? Because 10 raised to the power 5 में कुछ ऐड हो रहा है. 10 raised to the power 5 में something is adding and here we have 10 raised to the power 5. So basically if LHS में 10 raised to the power 5 में कुछ ऐड हो रहा है, so that will be greater. So n equals to 5 में true आ गया. So n equals to 4 में not true आएगा. अगर हम लोग सीरीज देखें तो so n equals to 1, 2, 3, 4 में सेटिस्फाई नहीं होगा, बट 5 के बाद 5, 6, 7 अप टू 100 तक satisfy होगा. So how many number of elements are there? The number of elements are basically 5 से लेके 100 तक. तो 96 is our answer.
4 तो गए ना, मैंने वैसे कैलकुलेट किया, 4 तो है ही नहीं, टोटल 100 है, 4 नहीं है, सो है कितना, 96. So that's why our answer is 96, integer type question. Correct. Let's see the next one. Next one is also, I think, very similar. The ratio of coefficient of the middle term. The ratio of the coefficient of the middle term in the expansion of 1 plus x raised to the power 20. तो ये तो बहुत सिंपल है ना, खाली आई थिंक इट इज कैलकुलेटर ज्यादा है. मिडल टर्म कैलकुलेट करना है एंड टू मिडल टर्म इसमें कैलकुलेट करना है. ओके, नो इश्यूज. लेट अस कैलकुलेट द मिडल टर्म हियर. सो n इज even. सो मिडल टर्म का पोजीशन इज, अच्छा n इज इवन तो अपने पास कितने वो होंगे, क्या बोलते हैं, टर्म्स 21 होंगे. करेक्ट. सो ऑफ टर्म्स 21 होंगे, तो मिडल टर्म विल बी, सो 1 प्लस एक्स रेश टू द पावर 20 में मिडल टर्म विल बी 20/2 into x raised to the power 20 by, which is 20c10 x raised to the power 10. We want only coefficient, तो हम लोग को खाली यही चाहिए. 1 plus x raised to the power 19 में will have two middle terms. One will be, if you know the formula, so 20c, 20 plus 19 plus 1 by 2, सॉरी 19 आएगा ना, ये 20 कैसे होगा, and 19c 19 minus 1 by 2. So this is basically 19c10 and 19c9. Coefficients ही ले रहा हूं मैं. So what do we have here is ratio of coefficient. So I guess we have to find 20c10 upon, and the sum of coefficients of two मिनट. अच्छा 19c9 plus 19c10. So basically 19c9 और 19c10 दोनों सेम ही है, right? So I can write it as 20c10 upon 2 into 19c9. NCR equals to NCN minus R. So both of them are same. और इवन बेटर, उससे भी एक फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला मिल गया, विच यू शुड नो, कि NCR प्लस NCN माइनस NCR minus 1 is N plus 1 CR. I think this would help better. So this I can write it as 20C10. Correct? 20C10. So 20C10 about 20C10, 1. I think this is our answer. No such calculation required. स्टार्टिंग में तो ज्यादा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा. So 20C10 upon 20C10, that means that is equals to 1. That is my answer. So next question. I think ये भी तुम लोग ने देखा ही हुआ होगा. The term independent of x in the expansion of, so let us first take this. So x plus 1 को I can write x raised to the power 1/3 the whole cube
प्लस 1⁻⁴ द होल क्यूब। सो ये क्या बन गया? दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट? So therefore, the expansion will become a cube plus b cube is a plus b into a square minus a into b plus b square। तो 1 को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आई थिंक, है ना? 1 की कितनी भी पावर ले लो। एंड हियर नीचे तो क्या है, x⁻² माइनस x⁻⁴ प्लस 1, सॉरी माइनस, ये x माइनस 1 को आई कैन राइट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। if you see x minus 1 को I can write a square minus b square. So this is nothing but a square minus b square. a square minus b square को क्या लिख सकता हूँ मैं? a minus b into a plus b. And denominator I can take x raised to power half common. So I'll get x raised to power half minus 1 the whole raised to the power 10. So बहुत कुछ cancel हो गया and we are left with x raised to the power 1/3 plus 1 minus. If we only two terms are left, एक ये and ये पूरा. So if we split the denominator, what we'll get is 1 plus x raised to the power minus 1/2, the whole raised to the power 10. Correct? So that is x raised to the power 1/3 minus x raised to the power minus 1/2, the whole raised to the power 10. खत्म, 1 तो cancel हो गया. So what do we have here is term independent of x. So general term lo लिखेंगे TR is NCR x raised to the power 10/3 into x raised to the power minus 1/2 into 10 minus r into minus 1 raised to the power r. तो negative sign भी है ना? That is 10CR minus 1 raised to the power r x raised to the power 10/3 into x raised to the power minus 5 plus r/2 minus 10/2, so minus 5. Now by indices we can add, so where मिलेगा 10/3 minus 5 plus r/2. We want term independent of x, मतलब x का पावर क्या होना चाहिए? 0. So 10/3 minus 5 plus r/2 should be equals to 0. So 10, यहाँ पे अगर if I take LCM, so I'll get 10 minus 15. So r/2 is 5/3. So basically r is, गड़बड़ हो गया क्या? What mistake did we made? तो मिस्टेक भी मेड क्या? कैलकुलेशन देखो, NCR x raised to the power, oh sorry sorry, होना चाहिए.
it should be r by 3, na? So r by 3 plus r by 2. So 5r by 6 equals to 5. 5 and 5 will get cancelled and r equals to 6. So T6, sorry, TR plus 1 होता है. So T6 plus 1, which is T7, will be equals to 10C6 x raised to the power 2. Sorry, ये है ना जनरल टर्म. X minus 1 raised to the power 6 into x raised to the power 2 minus, अच्छा x का तो आएगा नहीं, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x. That is 10C6, which is nothing but 10C4. So 10C4 क्या होता है? 10, 9, 8, 7 upon 4, 3, 2, 1. So 4 2s are 8, 3 3s are 9, 7 3s are 21. So 210 is my answer. Again, integer type question. Let's see the next one. If the greatest value of term independent of x in the expansion of, again independent of x है, so फटाफट खत्म करते हैं. So general term tr plus 1 is 10 cr x sine alpha raised to the power r into a by x cos alpha raised to the power 10 minus r. So let us group the terms. Sine r alpha into a 10 minus r cos 10 minus r alpha into x raised to the power r upon 2r minus 10 हो जाएगा. Correct? So x r minus 10 plus r. Term independent of x. So 2r minus 10 should be equals to 0, implies 5. So T6 is T5 sine raised to the power 5 alpha cos raised to the power 5 alpha a raised to the power 5. Greatest value के लिए sin and cos की वैल्यू चाहिए, तो we have to group them together. Okay. So 10c5 into 2 sin alpha cos alpha multiply and divide by 2 raised to the power 5 किया है मैंने into a raised to the power 5. So ये क्या हो जाएगा? 10c5 a raised to the power 5 upon 2 raised to the power 5 into sin raised to the power 5 2 alpha. So greatest के लिए 1 होना चाहिए and उसकी वैल्यू दिया 10 factorial upon 5 factorial the whole square. Correct? And we have to find the value of a, right? तो इसको तो ओपन करना पड़ेगा ना. तो 10 factorial upon 5 factorial into 5 factorial into a raised to the power 5 upon 2 raised to the power 5. And ये 10 factorial upon 5 factorial का square. 10 factorial cancelled, ये cancelled. So a raised to the power 5 is 2 raised to the power 5. So a is 2. This is our answer. Correct? So this was all from my side. That was the last question. Thank you all. We'll be continuing with this PYQs tomorrow also. So I hope you attend tomorrow's lecture as well. So till then, tomorrow we have at 12 o'clock. Till then, bye bye everyone. Take care. Thank you.